Hello. So today we will have the first research session hosted by IEEE SBVIT Pune. So I would like to introduce what we will be going through in this session. My name is Sahishnu, and this presentation was made by my friend Harsh Mehta. We are both execoms in the IEEE Pune, IEEE VIT Pune student branch. So to begin with, what is IEEE? अगर किसी को IEEE के बारे में कुछ पता है तो चैट में डाल दो. I would like to say that there is a 3 second or 5 second latency between what I'm saying and when you will hear it. So तुम जो भी चैट में डालोगे वो मुझे immediately नहीं दिखेगा. So my responses can be a little late, but Harsh will be replying to all of your queries. So सबसे पहले IEEE as an organization, if you could have heard about it, it is extremely famous for its conferences. अगर तुम्हारा पेपर IEEE के कोई कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हुआ है, that is a very big achievement. और ऑब्वियसली तुम्हारे DT में बहुत अच्छा ग्रेड मिल जाएगा अगर तुम्हारा ये पब्लिश हुआ है, एंड ऑल्सो इन योर प्रोफेशनल लाइफ इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. सो आवर क्लब इज अफिलिएटेड टू दिस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन. हमारा खुद का एक एप्लीकेशन है, हमारा खुद का एक चैटबॉट है और हमारा खुद का वेबसाइट है. ये सब इंटरैक्टिव है और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं इंक्लूडिंग इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स. So obviously we promote coding culture a lot in our club and we encourage innovative and creative projects. Another major thing that differentiates us from other technical clubs is that we aim to upskill members and to build a tech community. So जो भी हमारे क्लब में ज्वाइन होता है उनको बस लर्निंग में फोकस रहना चाहिए. हम पढ़ा देंगे, हमारा एग्जीकॉम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है. So you will learn everything that is necessary. We do not expect you to learn much when you come in. And also we built a tech community. WhatsApp में हमारा community बना है about research, and you can meet like-minded people here and you will get to know a lot more about research and how to publish your papers and so on. Obviously IEEE is the best place for all of this क्योंकि conference अगर publish करना है तो IEEE is kind of like the paper अगर publish करना है तो IEEE is kind of like the gold standard for conferences. So आज के session के key takeaways कुछ ऐसे होंगे. So today we will introduce you to research and design thinking. So research creates new knowledge and design thinking drives innovation. Design thinking is a way to set your mindset कि ऐसे हम सोचेंगे तो हमारा research paper बनेगा. We will also see innovation versus invention. Innovation is improving existing ideas and invention is creating a new one. And finally we will see how to actually write a research paper. अगर तुम्हारे पास कोई idea है तो उसका research paper कैसे बनाओगे. Also, as I mentioned, हमने community भी बनाया है. We will offer collaboration, mentorship, resources, and opportunities for students to transform their projects into impactful research. तो basically ये sessions के बाद तुम भी Walter White जैसे cook करोगे. And next, what is research? Research is a systematic investigation aimed at establishing facts or reaching new conclusions. Research is basically pushing the boundaries of human knowledge. Research is extremely important. अगर तुमने कोई अच्छा खासा research paper लिखा है, then you will actually affect the lives of people in general. Like quality of life बढ़ा दोगे तुम सब लोगों के. So the key pillars of research: asking the right questions. So you need to see कि कौन से problems face होते हैं लोगों का, and उसको हम कैसे solve करेंगे. So questions are very important. You need to define the problem statement properly. Then you should explore possibilities. कि अभी ये प्रॉब्लम्स तो मिल गए बट इसको सॉल्व करने के वेरियस मेथड्स होंगे. सो यू नीड टू एक्सप्लोर एज मेनी मेथड्स एज यू कैन एंड देन फाइंड आउट वन दैट यू थिंक इज द मोस्ट फीजिबल. एंड फाइनली अभी इतने सारे सॉल्यूशंस है तो हाइपोथेसिस को तुम्हें टेस्ट भी करना होगा. सो यू टेस्ट ऑल ऑफ दीज हाइपोथेसिस एंड देन यू कम टू अ फाइनल कंक्लूजन. सो रिसर्च सॉल्व्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू साइंटिफिक नॉलेज, and it is obviously essential for innovation and problem solving across various fields. तो अभी डिजाइन थिंकिंग के बारे में देखेंगे. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ हाउ आई अप्लाई डिजाइन थिंकिंग इन माय ओन रिसर्च प्रोजेक्ट. तो सबसे पहले यू नीड टू कॉन्सेप्चुअलाइज. इसमें कॉन्सेप्चुअलाइजिंग में फर्स्ट स्टेप इज टू एम्पैथाइज. So you need to think about what are the problems that people generally face in their day-to-day lives. So you can either ask yourselves or even better, you can ask your peers and everyone around you.
सो हाउ वुड यू एम्पथाइज? सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने बैठे थे, हमने सोचा हमारा डे टू डे लाइफ में क्या प्रॉब्लम होता है। तो मेरी एक ईडीआई ग्रुप मेंबर ने बोला था कि मुझे स्पोर्ट्स अरीनास बुक करने में बहुत इश्यूज होते हैं, और ऑफलाइन बुक करना होता है, ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मुझे जाना पड़ता है। एंड ऑब्वियसली फॉर लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस हु आर बुकिंग अरीनास ऑन अ रेगुलर बेसिस, उनके लिए और भी बड़ा इशू हो जाएगा ये, बिकॉज दे नीड टू रेगुलरली बुक अरीनास, बट उनको हमेशा वहाँ पे जाके उनसे बात करना पड़ेगा। So here we have empathized and now we can actually define the problem statement कि हमें sports arenas book करने में बहुत issue हो रहा है. We need some platform where we can streamline this process both for the vendors and the people who are buying this booking these arenas. So then we explore. तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए थोड़े आइडियाज ढूंढेंगे कि एक तो हमने सोचा वेबसाइट बना लेंगे और उसमें एक वेंडर का डेटा स्टोर कर लेंगे और अपने जो भी यूजर्स है उनका भी डेटा स्टोर कर लेंगे, हमारे एरिनास के डेटा स्टोर कर लेंगे और उसमें एक पेमेंट पोर्टल ऐड कर देंगे। तो दिस वुड मेक स्ट्रीमलाइन द होल प्रोसेस। तो ये हमारा आइडिया था एंड देन हमने प्रोटोटाइप बनाया। तो प्रोटोटाइप बनाते वक्त we made a simple prototype. Prototype is a simple working model which is not on a large scale. तो इसके लिए हमने एक वेबसाइट बना दिया, वी होस्टेड इट ऑन रेपलिट। वहाँ पे फ्री में मिल जाता है, आईडी भी मिल जाता है एंड यू ऑल्सो गेट टू होस्ट इट फॉर फ्री। सो हमने प्रोटोटाइप बनाया, उसको रेपलिट पे होस्ट कर दिया एंड वी गेव इट एंड वी गेव द लिंक टू एवरीवन हु वुड टेस्ट इट। एंड नाउ टेस्टिंग इज द नेक्स्ट पार्ट विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्चुअलाइजिंग। तो हमने प्रोटोटाइप बना दिया, हमने लोगों को दिखा दिए एंड दे गेव अस देयर व्हाटएवर दे थॉट अबाउट आवर प्रोजेक्ट, जो भी उनके इनपुट्स थे उनको हमने ध्यान रख के वी इम्प्लीमेंटेड दिस प्रोजेक्ट एक्चुअली। सो इम्प्लीमेंट करने के बाद वी कैन एक्चुअली राइट अ रिसर्च पेपर ऑन दिस। सो दिस इज अबाउट डिजाइन थिंकिंग। ये तुम्हारा सब्जेक्ट है बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन जनरल अगर तुम्हें पेपर लिखना है तो। Finally, we will see innovation versus invention. Invention is creating something entirely new. So, for example, the invention of a light bulb or the invention of internet. This was entirely new. No one had worked on something similar before. However, innovation is improving or applying new ideas to existing problems or technologies. ये हमारे लिए ज़्यादा easy पड़ेगा as students. Innovation is more common among students as it involves enhancing existing solution or tackling known problems in new ways. तो थोड़े एग्जाम्पल्स ऑफ इनोवेशन ये है, जैसे हम नॉर्मली स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स देखते हैं, स्मार्ट हेल्थ केयर डिवाइसेस और एआई टूल्स। तो एक और इनोवेशन का एग्जांपल हो गया स्मार्ट पिल डिस्पेंसर फॉर द एल्डरली और ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम फॉर फार्मर्स। हम कुछ आईओटी से बना सकते हैं, टेम्परेचर वो सब मेजर करके, वाटर डिस्पेंसर, ऐसे कुछ। एंड ऑब्वियसली मैंने जो अपना अरीना हब बताया, मेरा स्पोर्ट्स अरीना बुकिंग वेबसाइट बताया था, दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनोवेशन। Abhi we'll look at the life cycle of a design thinking project. The first step is business understanding. So we need to understand कि कौन से sector में हम काम कर रहे हैं. So if possible, you should talk to the vendors or whatever you are working on. For example, मेरा sports arena booking website था, so I should actually visit some sports arenas and talk to know how often people are booking their arenas and what issues they face in their day-to-day lives and so on. When it comes to handling their business. Second is data selection. अभी हम थोड़ा data gather करेंगे about our research problem, ये problem के बारे में. This is especially important in the case of machine learning. तुम्हें कोई data set use करना होगा and then तुम वो data को pass करोगे अपने model में. Data selection is very important, followed by data preparation. अभी जो data तुमने select कर लिया उसको तुम्हें थोड़ा सा pre-process भी करना होगा. For example, in terms of machine learning, you can remove NA values, मतलब empty जो भी fields है, you can remove those, and you can clean your data. कोई भी repeated values है वो निकाल सकते हो. These are some basic things. There are more advanced things also when it comes to data preparation. And then finally, modeling. Based on the data we have, we can actually create a model of our project, and then we evaluate this model. And if the evaluation is proper, we can actually deploy this model. And deploy करने के बाद, we can write a research paper on it and so on. And this is a cycle. वापस तुम business understanding करो, and data selection, data preparation, modeling you can do, and actually keep improving your project.
So अभी एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट देखते हैं which is the smart pill dispenser for the elderly. So the steps applied जैसे हमने देखा था डिजाइन थिंकिंग में, we need to empathize, define, ideate, prototype and test. So in the case of a smart pill dispenser, how would you actually apply design thinking? तो सबसे पहले we identify the need for a device that helps elderly patient manage their medication. तो अगर तुमने कोई पेशेंट्स देखे या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को देखे, then you might notice that they have to take a lot of medications, but if they miss the timing, this could create a lot of complications. So अभी एक problem statement define करता है based on our observation of the day-to-day lives of the people around us. So many elderly individuals forget to take their medication, leading to health complications. ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया. तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए निकलेंगे हम लोग. तो इसके लिए हम आइडिएट करेंगे, where we brainstorm ideas for a device that could dispense pills on a schedule and send reminders to caregivers. So अभी हम सोचेंगे थोड़ा सा, तो एक डिवाइस तो बना लेंगे जो पिल डिस्पेंस करेगा शेड्यूल पे, और जो भी हमारे पेशेंट्स के केयरगिवर्स होंगे उनको भी रिमाइंडर भेज देगा. So अभी एक प्रोटोटाइप बना देंगे लो कॉस्ट वाला that can store and dispense pills at preset times. So after you make the prototype, you actually gather some feedback from users. You test the prototype. So in this case, our users are elderly patients and their caregivers, and then we can refine the device based on their input. So finally, हमारा outcome ये आ गया that we created a smart dispenser that sends reminders to caregivers, helps patients manage medication more effectively, and reduces missed doses. So this is a good project, but there is not much in terms of research, but we'll talk about that later. एक और प्रोजेक्ट हम देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला था मेरा अरीना हब, तो वहाँ पे मैंने एम्पैथाइज किया था दैट अरीना का, स्पोर्ट्स अरीना को बुक करना थोड़ा इशू हो रहा है लोगों को, तो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना दिया दैट वी वांट टू स्ट्रीमलाइन दिस प्रोसेस ऑफ हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था दैट बुकिंग स्पोर्ट्स अरीनास इज एन इशू एंड पीपल फेस lots of delays when they're trying to book arenas. So we ideated upon this and we decided that we'll make a website to streamline this process and make it online so people can book arenas from the comfort of their home. And then we made a prototype, एक simple सा, and then we tested our project. Now अभी तो project तो बन गया, but इस पर research paper कैसे लिखेंगे? तो इसका एक research question उठाना होगा. That is something that no one had worked on till now, or something that no one had worked properly till now. So how can smart devices be used to improve healthcare for elderly patients? So ये हमने research question उठा लिया, और अभी हम एक research paper का structure देंगे. ये structure is very important. अगर तुम्हें research paper लिखना है, it should have an abstract, introduction, methodology, results and discussion, and then a conclusion. So in the abstract, this paper discusses the development of a smart pill dispenser to help elderly patients take medication on time. Abstract में हम बस ऊपर से बता देंगे कि पेपर में क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग और हमने क्या क्या किया है. And then we introduce this project properly. Introduction में we talk about the need for our project and the motivation for this project. So in this case, we need better medication management in elderly patients. And then methodology. Methodology mein we just talk about the detailed development process from ideation to testing. For example, in this case of a smart medication management, you can talk about the kind of microprocessor you have used. You can talk about the sensors you have used. You can talk about how you are storing the pills and how you are dispensing them on time and so on. Methodology में हम in depth जाएंगे, पूरा process बताएंगे कि हमने project बनाया कैसे. And then results and discussion. अभी हमारा project बन गया, तो इससे हमें क्या results मिले? We can put some graphs. For example, अभी हमने medication dispense कर दिए, तो पहले जब ये product नहीं था लोगों के पास, तो कितने मेडिसिन मिस हो रहे थे, कितने मेडिसिन टाइम पे नहीं ले रहे थे, वर्सेस अभी प्रोजेक्ट बनने के बाद कितने ले रहे. सो इफ यू कैन यूज सम स्टैटिस्टिक्स एंड शो दिस, दैट वुड बी ग्रेट. सो एनालिसिस ऑफ यूजर फीडबैक, यूजर से भी हम फीडबैक लेंगे कि उनको प्रोडक्ट कैसे लगा, डिवाइस परफॉर्मेंस एंड हाउ इट रिड्यूसेस मिक्स्ड डोजेस. फाइनली वी कंक्लूड बाय हाउ द स्मार्ट पिल डिस्पेंसर helps reduce medication-related health risks and future improvements. So future improvements भी बता देंगे हम conclusion में कि बाद में हम और क्या improve कर सकते हैं इसमें.
So the keynote is that ये smart pill dispenser shows how an innovative solution can evolve into a thought about it ourselves a lot कि हमें day to day life में कौन से problems होते हैं, and finally we got this idea कि sports arena booking थोड़ा मुश्किल हो सकता है. So to tackle this more efficiently, you can actually talk to other people, conduct user interviews and surveys. You can maybe select an area where you want to work on, and you can talk about people based on the problems they face in those areas. For example, you can, in my case, you can select sports and ask people ki, in terms of playing sports, what issues do you face regularly? So कोई तो बोल देगा कि ऐसा अरीना बुकिंग में मुझे इश्यूज हो रहे हैं, मेरे टीम को प्रैक्टिस करने के लिए सही से टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि अरीना बुकिंग में बहुत टाइम है. And then the second challenge is to test the prototype in real world conditions. These are just two example challenges, और भी तुम्हें challenges आ सकते हैं. But testing the prototype in real world conditions is also challenging. For example, हमने Replit पे host कर दिया था. So I can't actually test this in real world conditions because Replit only gives me a development server and it only hosts it for as long as I have it active on my phone. And या कुछ 5 मिनट तक ऐसे host कर देता है. So testing this is quite difficult. So the best way to tackle this is to create a simplified version of the product and test it with a small group of users first, and then gather feedback. And based on that feedback, you can further improve the product, and then you can actually create the main product. So हमने वही किया था, सिंपल प्रोटोटाइप बनाया था ऐसे छोटे से होस्ट करके, and then we actually showed it to our EDI guides and so on and our own fellow students, and based on their input we can further improve our project. So the outcome is that this design thinking process helped us stay focused on user needs and iterate efficiently, ultimately leading to a functional and user friendly product. So डिजाइन थिंकिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है. तुम प्रोडक्ट को रिसर्च पेपर बनाना चाहते हो तो डिजाइन थिंकिंग इज नेसेसरी. रिसर्च के लिए डिजाइन थिंकिंग इज अ गुड माइंडसेट फॉर यू टू हैव. सो फाइनली अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो चैट में डाल सकते हो. लाइक आई सेड, मेरा लेटेंसी का इशू हो सकता है, बट हर्ष तुम्हारे जो भी डाउट्स है वो आंसर कर देगा. कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. If we want to produce just a research paper, not one made from projects, how do we go about it? So this requires you to ideate a lot. Like for example, Mahajan sir ने हमें बताया था कि there was someone who made a different type of socket that you can actually put into your regular day-to-day home appliances, जिसके वजह से तुम्हारा space manage होगा. तो ऐसे कुछ बहुत ऑब्वियस चीज है, बट उसके लिए तुम्हें बहुत सोचना होगा, और उस पे यू कैन क्रिएट अ रिसर्च पेपर. दिस इज नॉट अ प्रोजेक्ट, दिस इज एक्चुअली अ न्यू आइडिया दैट डजंट एग्जिस्ट ऑलरेडी. सो दैट इज हाउ यू प्रोड्यूस जस्ट अ रिसर्च पेपर. ये पीडीएफ शेयर हो जाएगा. हाउ डू आई स्टार्ट एज आई एम अ फ्रेशर. सो अगर फ्रेशर, सब लोग फ्रेशर्स ही रहते हैं स्टार्टिंग में, किसी को कोडिंग कुछ नहीं आता है, यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोज एंड सो ऑन टू गेट बेटर टेक्निकली, और ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बना दो. और ऐसे सोचो, लाइक
It is not your technical skills that stop you from doing something. Your idea is more important than your technical skills. Technical skills are also important, but if you are making something that doesn't exist already, then you can get the necessary technical skills on the way, YouTube से या कोई भी. And हम IEEE में भी workshops organize करने वाले हैं, जो you can attend to get some more technical knowledge. Freshers में किसी को भी कुछ नहीं पता रहता. What about papers which have no problem statements? Problem statement. Like you need some sort of problem statement. How are you going to write a research paper? What if the idea that we have been working on is also being replicated somewhere? Which research will be acknowledged? So ये तुम chances का मतलब just work on the project and publish it. ये बहुत issues हो सकता है, बाद में तुम्हें दिख जाएंगे अगर ऐसे replicate हुआ है. ऐसे cases होता है, but which research will be acknowledged? जो भी पहले publish हुआ वही होगा. The process between prototyping and final product, solving bugs is obvious, but तुम वही बोला था ना, you can show your prototype to users and gain feedback about it. And obviously the final product will be on a larger scale than the prototype. So that is something that you should consider. For example, data set बहुत बड़ा बनेगा तो data management बहुत hard हो सकता है. Hardware projects में this is very obvious. Language barriers होते हैं. हाँ, research papers usually English में ही लिखते हैं, तो वो है, but हो ही जाएगा. When will IEEE फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट नहीं होगा, बट हमारा मेंबरशिप होने वाला है, मेंबरशिप ड्राइव, दैट यू कैन गेट मेंबरशिप इनटू IEEE, और जो भी वर्कशॉप्स हम ऑर्गेनाइज करेंगे वो उस पे तुम्हें बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा. सो यू कैन बिकम अ मेंबर, एंड इन सेकंड ईयर यू कैन बिकम एन एग्जीकॉम. अभी मैं और हर्ष एग्जीकॉम्स है, तो इन द सेकंड ईयर यू कैन बिकम एन एग्जीकॉम. You can FI students join. You can become a member, but to actually become an official like part of the club, you need to wait till second year. हाँ, कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करोगे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा. उसमें हमारे सारे IEEE मेंबर्स रहेंगे, इंक्लूडिंग द कोर मेंबर्स. एनी डाउट्स यू हैव, यू विल गेट, that will get solved. Benefits of being in IEEE, वही बोला था. If you are a member of IEEE, you will get a huge discount in publishing research papers in IEEE and also in our workshops. And if you are an execom, you will gain access to industry projects, and you will also learn a lot of new things through our programs like our execom training program.
और कोई क्वेश्चंस है किसी को? हम 7:30 तक रहने वाले हैं यहाँ पे. You have any questions, you can ask till 7:30. इस मेंबरशिप पेड, हाँ मेंबरशिप के लिए पैसे देने को. हैकाथन हमने रिसेंटली एक कंडक्ट किया था, वेयर द फर्स्ट इयर्स वर सपोज टू submit Figma projects. Figma is an application to prototype the front end for websites, and the second and third years made an actual website. So hackathons हम conduct करते हैं recently. It is possible to publish a paper on a game if you have done something innovative in the game. The existing domains are necessarily more than you can. हैकाथन का वही अभी का हैकाथन में फर्स्ट इयर्स वर सपोज टू मेक अ फिग्मा प्रोजेक्ट एंड द सेकंड एंड थर्ड ईयर मेड एन. That was basically what happened. It was submitted to us online, and we had actually given the results as well. अभी ऑडी सिस्टम में हमने रिजल्ट अनाउंस किया था और जो भी विनर्स हैं उनको फैसिलिटेट भी किया था. ठीक है, तो अभी लास्ट के थोड़े क्वेश्चन आंसर कर देते हैं. हाउ टू डील विद सर्वेज एंड इंटरव्यूइंग अदर्स टू सॉल्व द रेस्पेक्टिव XYZ प्रॉब्लम्स. सो यू कैन आस्क पीपल जो तुम्हारे क्लास में है, यू कैन गिव फीड लाइक गूगल फॉर्म में डाल दें कि तुम्हारा ये यूजुअली क्या नेसेसिटी है. हमने ज़्यादा सर्वे नहीं किया था, बट इट इज़ अ गुड आइडिया टू टेक सर्विस. एंड इफ यू कैन टॉक टू इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स दैट वुड बी इवन बेटर. अगर तुम्हारे कोई दोस्त भी कोई कॉन्टैक्ट्स है इन द इंडस्ट्री, you can ask him directly what problems are you facing, and then based on those problems you can create your research paper.
So I think we can end now. अगर और कोई क्वेश्चन नहीं okay then thank you everyone for attending. It's been a great audience.